You can start the session, sir. Yeah, Dr. Priyanka, please proceed. Okay, sir. A warm welcome and fresh morning to everyone present in the lecture today. From today onwards, we will start Ayurveda Teacher Association Student Wing Research Methodology and Medical Statistics Lecture Series Part 1. Firstly, I would like to invite Dr. Krishna Devkar sir, ATA Student Wing President, for introduction of ATA Student Wing. हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट हूँ। उसके लिए मैं सभी टीचर का धन्यवाद करता हूँ। आज हमने स्टूडेंट के लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है। इसके पहले भी हमने पीजी प्रिपरेशन पे एक लेक्चर अरेंज किया था और दूसरा लेक्चर था फ्यूचर स्कोप इन आयुर्वेदा, इस पर अरेंज किया था। हमने स्टूडेंट के लिए एटीए स्टूडेंट विंग का निर्माण किया है। हमारे स्टूडेंट विंग का जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें हम स्टूडेंट के लिए लेक्चर सीरीज अरेंज करना, उनको गाइड करना, उसके साथ ही स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम जो भी यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे उनके प्रॉब्लम रहते हैं वो सॉल्व करने के लिए हमने स्टूडेंट विंग का निर्माण किया है। साथ ही स्टूडेंट डेवलपमेंट पे कार्य करने के लिए हमने स्टूडेंट विंग का निर्माण किया है। मैं आज सभी उपस्थित स्टूडेंट को अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हम अपने स्टूडेंट विंग को ज्वाइन होकर लेक्चर सीरीज का उपयोग ले और हमारे स्टूडेंट विंग को स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू वेरी मच। Priyanka. Thank you, sir, for your introduction about the student wing. Now, I would like to invite Dr. Gaurav Savarkar, sir, ATA student wing mentor, for guidance about lecture series. Thank you, Priyanka. First of all, I welcome today's our guest speaker, Dr. Kiran Talware, sir, our President ATA wing, Dr. Rahul Suryavanshi, sir, and all the delegates who are joined here and the member of Student Council members. Today, I am going to elaborate this session and this case series. This is a research methodology and multiple statistics case series part 1. In this case series, there are 8 guest lectures we are going to be conducted. And for that, we have eminent guest speakers like Dr. Kiran Talware, sir, Dr. Mohan Joshi, sir, Dr. Vinay Pawar, sir, Dr. Amit Nakani, sir, and Dr. Poonam Savarkar, ma'am, and Dr. Sanjay Paikrao, sir. We are going to cover most of the some part of the statistics and some part of the research methodology in this part 1 case series. So I request all the students, they can propagate this case series because of that, the PG students and the undergraduate final year students take advantage of that case series. And this case series is totally free of cost. They can join through the digital app and this case series is also YouTube live. And afterwards, we are going to be publish this in domain or publish this YouTube link in the public domain. So, and this lecture is also available on our the ATA YouTube channel. So I request all the students to join here as early as fast. We are going to start our guest lecture soon. Over to Priyanka. Thank you, sir, for your guidance on lecture series. Now, I would like to invite Dr. Rahul Suryavanshi, sir, President of ATA. Thank you, Dr. Priyanka Chavan, for introducing me. मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। हमने जो 5 साल पहले आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन का निर्माण किया था, कि उसके पीछे का एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स थे कि क्वालिटी एजुकेशन, और क्वालिटी एजुकेशन के साथ टीचर्स को डिग्निटी रिस्पेक्ट के लिए हम काम शुरू कर दिया। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन काम करते समय तो स्टूडेंट को भी इसमें इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये हमारे ध्यान में आया तो हमने स्टूडेंट विंग शुरू कर दिया। स्टूडेंट विंग शुरू करते करते उसके मेंटर डॉक्टर गौरव सावरकर, उन्होंने खुद ही मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा था कि हम स्टूडेंट को लेके कुछ अच्छा कर रहे, जिस स्टूडेंट को अच्छे लेक्चर सुनने को मिल सकते हैं। हम अपना आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया के अच्छे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए अच्छे अच्छे लेक्चर दे सकते हैं। ये कंसेप्ट रखकर हमने स्टूडेंट विंग शुरू की। स्टूडेंट विंग के पीछे और भी स्टूडेंट के अदर स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड अदर एक्टिविटीज शुड बी हमें करनी है, ये सोचकर हमने ये स्टूडेंट विंग शुरू किया। उसमें से पहला पार्ट जो है एकेडमिक पार्ट है, और डॉक्टर कृष्णा देवकर जो है हमारे प्रेसिडेंट है, और गौरव सावरकर, दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी सीरीज ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी शुरू की है, उसका ज्यादातर फायदा
अपने पीजी स्टूडेंट को होने वाला है, प्री एमडी के पीजी स्टूडेंट है, और मेरे ख्याल से 4th ईयर के स्टूडेंट्स की भी उनमें सब्जेक्ट एक रिसर्च का है, तो उनमें भी थोड़ी सी रिसर्च की इंटरेस्ट निर्माण हो सकता है इस के। उसके लेक्चरर डॉक्टर किरण तवलारे हमारे एटी के बहुत इंथुजियास्टिक एंड डायनामिक पर्सनालिटी है, जो हमेशा बहुत सारे लेक्चर्स रिसर्च पे भी लेते हैं और पीएचडी प्रिपरेशन के लिए भी बहुत सारे लेक्चर्स लेते रहते हैं सर। तो इतना अच्छे लेक्चर आज है, तो मैं सभी को शुभेच्छा देता हूं, और मैं सभी स्टूडेंट्स को, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो अपना एटीए स्टूडेंट विंग जो एक्टिविटीज कर रही है, आप स्टूडेंट्स के लिए है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए है, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले, और स्टूडेंट को जो कुछ भी अगर रिक्वायर है, जो कोई सब्जेक्ट्स आपको रिक्वायर है आपके कॉलेज में या आपके आजू बाजू में वो लेक्चर्स नहीं होते, उसका नॉलेज आपको नहीं मिलता, तो अपनी स्टूडेंट विंग उसके लिए तैयार है, आपको नॉलेज, आपको अच्छे से लेक्चर आपको अवेलेबल करके देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir, for your speech. Lastly, I would like to invite our headstrong chief guest and speaker for today's lecture, Dr. Kiran Tavlare, sir. Before starting the lecture, I would like to give short introduction of Dr. Kiran Tavlare, sir. He has accomplished a lot in just a short period of time, but due to shortage of time, let me highlight few of his accomplishments out of many. Dr. Kiran sir has completed his BMS, MD, PhD in Kriyashari subject from MUHS Nashik. He is currently assistant professor in Department of Kriyashari in Sri Ayurved College, Nagpur. He is also a faculty of MUHS HZ Unit, editor-in-chief for Ayush International and Ayurveda Teacher Association, co-editor for Journal of Education Technology and Health Science, editorial board member of IJAAR, JONAM, reviewer for Elsevier, JEPCAM, eJournal, Ras Amrit, IOLOG, WAC 2019. He has published 4 books, work as the facilitator for curriculum development program for Kriyashari under CCIM and AIA Delhi. All India trainer for Kriyashari and except in National Teacher Training Program organized by collaboration of RAV, CCIM and AIA Delhi. Received 2 books copyrights from Central Government of India for Global Ayurveda Book Part 1 and 2. मैम चालू कर देना, बहुत हो जाएगा, लंबा है पूरा. Total research article published by him is 29. Teaching experience 13 years, PG guide 9 years, medical education teaching experience 8 years. Got Best Teacher Award 4 times in 2016, 17, 18 and 19. PhD examiner for research methodology. He has completed 1 research project as a PI and 2nd as a co-PI, and 1 is ongoing scientific paper. He has done 24 conferences and workshops and 16 paper presentations. He is a living inspiration to everyone. Thank you, sir, for taking our valuable time for us. Now I request Dr. Kiran sir to begin today's lecture and enlighten us. Thank you, Priyanka. First of all, I share my slides. Okay. Today, before going to our lecture, first of all, we would like to thank President ATA, Dr. Suryavanshi sir, and mentor of Dr. Gaurav Savarkar sir, and President of this student wing, Dr. Today, Dr. Priyanka, one of the students is Priyanka. I am also very thankful shield provided to student also. Okay. After that, I think, okay, Gaurav sir, we. Yes, sir. Please start. Okay, sir. Okay. First of all, after completion this participant will be able to give you good research, types of research, and Dr. study Kiran, designs. sorry Yes, to sir. interrupt you, but your voice is breaking intermittently. Okay,
Now, hello? Yeah, please go on. Okay. After this session, student should be able to know the study design and Finner's criteria. We will see one by one. Okay. First of all, definition. What is meant by perfect definition of research? Then objectivity, then steps of research, and see one by one. Okay. What is definition of research? That is a scientific and systematic search for knowledge. Basically, search for knowledge is research. But what kind of search? That is a systematic search. Okay. Second one is systematized effort to gain a new knowledge. Because जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके पहले सिस्टमैटाइज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलरेडी उसकी ब्लू प्रिंटिंग तैयार होती है. इट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक. ओके. एंड वॉयज ऑफ डिस्कवरी. बाकी जितने भी बुक्स है उसमें बहुत सारी रिसर्च की डेफिनेशन अवेलेबल है. फीचर्स ऑफ द गुड रिसर्च. व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च? फर्स्ट वन इज टेस्टेबिलिटी. कैन वी टेस्ट दिस रिसर्च अगेन एंड अगेन? दैट इज टेस्टेबिलिटी. एक बार अगर किया तो क्या हम उसको दोबारा भी टेस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये चेक करना टेस्टेबिलिटी होती है. सेकंड वन इज रिपीटेबिलिटी. रिपीटेबिलिटी मींस रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रेप्लिकेबिलिटी. सेम रिजल्ट रेप्लिकेबल होनी चाहिए और बार बार वो जो रिसर्च किया है उसको हम अगेन एंड अगेन रिपीटेडली कर सकते चाहिए. कॉन्फिडेंस इंटरवल. थर्ड इज कॉन्फिडेंस इंटरवल. नॉर्मली यूनिवर्सल एक्सेप्टिंग confidence interval is 95%. Means if any researcher or any other person doing the same research at 100 times, there is only 5% chance to differ the result from old result. Okay, it's called as confidence interval. So accepting confidence interval is 95%. Means 95% times result should be remain same. Okay. Precision we call as the reality or closer to truth. क्योंकि वहां पे दो कंपाउंड होते हैं. फर्स्ट इज पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स. पॉपुलेशन की जो भी वैल्यू है, रियल वैल्यू. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हमें 100 लोगों का एज भी लेना है. ओके. पर उस गांव की जो लोक संख्या है या जो पॉपुलेशन है वो 1000 है. तो हमने 1000 में सैंपल लिया 100 का. अगर हम 1000 का सभी का एच बी करते थे, सभी पूरे टोटल पॉपुलेशन का, और फिर एवरेज निकालते थे, हम एवरेज फाइंड करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो सभी का एच बी लेने के बाद अगर हम एवरेज लेते हैं तो ये हो गया ट्रूथ, ये हो गया एक्यूरेसी, ओके, रियलिटी, है ना. बट इन रिसर्च इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, ड्यू टू टाइम और मनी और वी कॉल्ड एज इट इज नॉट फिजिबल, राइट. तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं. तो पॉपुलेशन के जो भी फिगर्स होती है या जो भी एवरेज एच बी होगा उसी को हम कहेंगे, एवरेज जो एच बी होगा उसको कहेंगे पैरामीटर्स. मतलब पॉपुलेशन का जो भी फिगर्स है वो है पैरामीटर, और हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सैंपल में. ओके. तो सैंपल का जो भी फिगर्स आएंगे या जो एवरेज आएगा वो होगा स्टैटिस्टिक्स, राइट. तो इन रिसर्च वी विल ट्राई to reach closer to the reality or closer to the truth. Okay. Generalizability. अगर हम एक एरिया में रिसर्च करते हैं, okay, तो वो लोकलाइज रिसर्च हो जाता है. हमारा पॉपुलेशन क्या है, हमने किस पॉपुलेशन में सैंपल ड्रॉन किया था, उसी पॉपुलेशन को वो रिजल्ट अप्लीकेबल होते हैं. ओके. तो जब हम उसको जनरलाइज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम नागपुर के रीजन में अगर एक आधा रिसर्च करें, नागपुर रीजन में, तो वो रिसर्च हम पूरे महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में जनरलाइज नहीं कर सकते. ओके. क्यों? क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन था, है ना, जहां से हमने सैंपल ड्रॉन किए, वही बेसिकली एक रीजन से बिलोंग करता था. ओके. तो इसके लिए हमको ये याद रखना है कि कौन से पॉपुलेशन को हमारा रिजल्ट जनरलाइज करना है, उसके हिसाब से ही सैंपल उसी पॉपुलेशन से ड्रॉन करना है. ओके. एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी. आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, रिजल्ट जो भी है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका, तभी उसको वैल्यू होंगी. क्योंकि सब्जेक्टिव में वेरिएशंस आते हैं, है ना, पर्सन टू पर्सन वेरिएशन होते हैं.
जैसे हम सब्जेक्टिव वर्क करना चाहते हैं तो किसी की ओपिनियन है, फीलिंग्स है, राइट, या परसेप्शन है, तो ये सभी चीजें हम सब्जेक्टिव पैरामीटर पे देखते हैं, है ना। इसीलिए गुड रिसर्च जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉलो करता है उसको गुड रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद हो गया। इसका हमने कोड बनाया था ट्रिप गो, मतलब टेस्टेबिलिटी, रिपेयरेबिलिटी, कॉन्फिडेंस इंटरवल, प्रिसीजन, जनरलाइजेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, है ना। इन शॉर्ट वी कॉल्ड एज ट्रिप गो। Then there are 4 steps in research. First is idea, second research problem, then research problem converted into research question, and research question converted into research hypothesis. But please remember these 4 steps: idea, research problem, research question, and research hypothesis. Okay, so we'll see one by one. First of all, idea. What is meant by idea? Idea एकदम simple concept है. Idea means any new concept generated in any person, generated in their mind. Okay, or we can simply call it as the spark in their mind, or keen observation in clinical meetings or clinical exposure, okay, or thinking, or sometimes accidentally also comes a new idea. Okay, समझो कोई स्टूडेंट है, इंटर्न है, अगर वो ओपीडी में जा रहा है, अंडर प्रैक्टिस जा रहा है, ओपीडी में जा रहा है, तो उसका कीन ऑब्जर्वेशन अगर है तो भी एक बड़ा क्लू दे के जाता है, वो उसके लिए एक बड़ी आइडिया करके काम करती है। कभी कभी हम बोलते हैं सिक्स सेंस, हाँ मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है क्या, तो लेट्स चेक, ओके, कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है। आइडिया, इसके बेस्ट 2 एग्जांपल है। एक्सीडेंटल के पहला एग्जांपल है फैन रॉन्टजेन का, ओके, जब एक्सरे का इन्वेंशन हुआ था, सबको पता है ये स्टोरी कि सर रॉन्टजेन जब अपने लैब में काम कर रहे थे, ओके, तब उनकी वाइफ वहां पे आई, गुस्से से कि आप कंटिन्यू लैब में रहते हो वगैरह वगैरह, और अचानक उन्होंने जहाँ पे हाथ रखा वो बेरियम उसके ऊपर गिर गया, और उन्होंने देखा कि बेरियम के कारण एक्सरे डायरेक्टली पास हो रहे थे। तो ये एक्सीडेंटल रिसर्च का बेस्ट एग्जांपल था। और सेकंड, कीन ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो उसका एग्जांपल है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक, दैट इज पेनिसिलिन, ओके। तो जब उन्होंने 7-8 दिन लैब में नहीं गए, उसके बाद जब लैब में गए तो उन्होंने देखा कि एक पेट्री डिश में जो भी उनका सैंपल था उसमें से एक हाफ कॉलोनी जो थी बैक्टीरिया की वो किल हो चुकी है। वो जस्ट फेंकने गए थे तो उनको ध्यान में आया, तभी उनका कीन ऑब्जर्वेशन काम किया और आगे पेनिसिलिन का इन्वेंशन हुआ। तो आइडिया में क्या क्या है, स्पार्क इन माइंड, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन हो सकता है और थिंकिंग भी हो सकती है, ओके। देन नेक्स्ट इज रिसर्च प्रॉब्लम। Basically, idea converted into research problem, no problem. But a problem is nothing but the difficulty faced by researcher before starting the research. जैसे हमारे पास कोई आइडिया आती है तो सबसे पहला क्या होता है, माइंड में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि यार ये कैसे करेंगे, है ना, इट इज पॉसिबल और नॉट लाइक दैट। लेकिन जैसे ही हम आगे काम करते हैं तो रिसर्च प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू रिसर्च क्वेश्चन, ओके। रिसर्च क्वेश्चन, एंड रिसर्च क्वेश्चन इज अ nothing but actually starting point of research, जहां से हम एक्चुअली रिसर्च स्टार्ट करते हैं रिसर्च क्वेश्चन से। इन एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्वेश्चन इज कन्वर्टेड इनटू रिसर्च हाइपोथेसिस। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आई रोट हियर एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल ओनली, देयर इज absence of descriptive research. We see on the screen analytical and experimental. I explain one by one. Research question is converted into research hypothesis, but in what type of study? Analytical and experimental. Okay. Why not descriptive? My question is, why not descriptive? Or why not 3 types of descriptive study design? Because descriptive studies are itself hypothesis generating studies. Okay. Because it's basic type of study, not descriptive study. Okay, descriptive study is itself hypothesis generating studies. That's why first type of studies there is no need of hypothesis. And once hypothesis form or generate in the descriptive studies, that same hypothesis we can test in analytical and after that in experimental research. Okay, confirm in experimental research.
We will see in next few slides. Components of the good research question. What is the exactly component of good research question? There is one small code, PPS. If your study is descriptive, please listen. If your study is descriptive, then you just fulfill the little bit criteria like VPS. Your research question should have a variable in population and it reflects the study design. What do you mean by variable? Any measurable or any changeable characteristics is called variable. Any changeable characteristics is called variable. Then population in whom study will be carried out is called population. And study design. Study design means there is a predefined set of procedures to answer our research question. It's called study design. Now, we see one example. What is the incidence of obesity in Nagpur city? Okay. What is our question? What is the incidence of obesity in Nagpur city? So, what is the variable in above question? Variable is, you can unmute and answer me. If not possible, I will continue. Okay. What is the incidence of obesity in Nagpur city? Variable is obesity. Because obesity high हो रही है ना, that's why obesity is a variable. Population in Nagpur city. And study design, as we see here, this question is starting from what? WH type question. That's why this study design comes under the descriptive study design. Okay. I will explain how. Okay. Next, again, component of good research question. If your study is higher type of study, like analytical or experimental, higher type of study. And in that case, you should follow the PICO or PICOT criteria. Some people also called as a PICO criteria. Okay, no problem. PICO or PICOT criteria. P for population or patient, I for intervention, C that is comparison, O outcome, and T for time. Okay, I will explain one by one. First, patient or problem or population. One patient or group of patients we consider as a population. Everyone knows very well, I know. Then intervention, it is most important. हम इंटरवेंशन किसे कहते हैं? यहाँ पे चार मैं आपको 4 क्राइटेरिया बताऊंगा, जिसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए. नंबर 1, अगर इंटरनल देते कुछ भी इंटरनल ट्रीटमेंट है, इंटरनल मेडिसिन, वी कॉल्ड एज इंटरवेंशन, है ना, सबको पता है. सेकंड, अगर हम कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी करते हैं, ओके, ऑइंटमेंट लाइक मलहर लाइक और लेप लाइक, तो भी इंटरवेंशन. थर्ड, अगर हम योगा बोलते पेशेंट को योगा करने के लिए, हम बता रहे हैं ना, योगा भी बताते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं योगा वाइज, तो भी इसको इंटरवेंशन के अंतर्गत आता है. या फिर सिंपल, अगर आपका कंट्रोल ग्रुप है और उसको अगर आप जैसे डाइट की स्टडी करना चाहते हो और आप एक ग्रुप जो है उसको कंट्रोल करके रखियो, जस्ट डाइट से आपका कहना है कि अगर हमने डाइट भी कंट्रोल किया तो भी वेट कम होता है. तो आपने इंस्ट्रक्शन दी पेशेंट को कि आपको ऐसा डाइट लेना है, इतने बजे लेना है और ये खाना है. तो यहाँ पर जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसके लिए ये भी स्टडी अंडर इंटरवेंशन आती है. तो 4 क्राइटेरिया ध्यान में रखिए. और एक कुछ नोटिंग अगर करना चाहे तो एक नोट कर सकते हैं आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ऐसे इंटरवेंशंस को इस सभी जो मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने, कोई प्रोसीजर है, कोई कंट्रोल्ड है, कोई ट्रीटमेंट है, तो दिस ऑल थिंग्स कम अंडर independent variable. Okay, independent, remember. Then next one is comparison. No, okay, first of all we explain outcome. Intervention, इसका result, treatment दी, result मिला, that is outcome. Effect or major phenomena or any criteria. Okay, or conclusion, result like that. This word is used for outcome. Outcome comes under a dependent variable. मतलब ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंट होगी
और डिसीज इंडिपेंडेंट हो गया। सिंपल, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक। क्या हो गया? ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंट एंड डिसीज डिपेंडेंट। ओके, फॉर एग्जांपल कॉज टू इफेक्ट, आपको ये बताना अभी कॉज टू इफेक्ट। हमने देखा कि पहले देखा हमने इधर इंटरवेंशन और डिसीज एक हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि कॉज टू इफेक्ट, कॉज इज इंडिपेंडेंट एंड इफेक्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इफेक्ट टू कॉज बोला तो उल्टा हो जाएगा। ओके, कॉज टू इफेक्ट। देन रिस्क फैक्टर टू आउटकम, अगेन रिस्क फैक्टर इज इंडिपेंडेंट एंड आउटकम इज डिपेंडेंट। ओके, रिस्क फैक्टर टू आउटकम। ओके, हेतु टू एजी, सेम। ओके, exposure to outcome, again here exposure is independent. Okay, and outcome is dependent variable। इसके अलग अलग नाम से आपको पढ़ने में मिलेंगे कि बुक्स में। कंपैरिजन, व्हाट इज द कंपैरिजन? इंटरवेंशन ऑफ द इंटरेस्ट। अगर हम हायर लेवल की स्टडी करते हैं, एनालिटिकल और क्लिनिकल स्टडी, तो हमें कैसा पता कि हमारी जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वही बेस्ट है? फॉर एग्जांपल इमेजिन करिए कि फीवर के लिए आपके पास पेशेंट आया। ओके, और आपने उसको त्रिभुवन कीर्ति दी और पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है कि वो त्रिभुवन कीर्ति से ही ठीक हुआ? हो सकता है कि उसका वायरल फीवर अपने आप चला गया, है ना? तो इसीलिए हमको कंपैरिजन लेना पड़ता है, ताकि दो ग्रुप रहेंगे, एक ग्रुप में हम त्रिभुवन कीर्ति देंगे, दूसरे ग्रुप में कुछ देंगे या नहीं, या दूसरा कुछ प्लेसिबो दे सकते हैं, या दूसरे कुछ ट्रीटमेंट देंगे। अगर हम उसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं, गोदंती दे सकते हैं, पैरासिटामोल है, तो हम किसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं? या फिर कंट्रोल भी रख सकते हैं। और हमको तभी समझेगा एग्जैक्टली रिजल्ट किसके कारण है, वेदर दिस रिजल्ट इज ड्यू टू त्रिभुवन कीर्ति और इट इज बाय चांस। बाय चांस 5% चांस होता है ना, बाय चांस का, अपने आप भी हो सकता है ना, वही। And last one is time. What is the appropriate follow-up time to assess the outcome? हम रिसर्च क्वेश्चन में भी टाइम ले सकते हैं। ओके, लेकिन पीजी स्टूडेंट के लिए या यूजी स्टूडेंट के लिए टाइम रिक्वायर नहीं होता है ज्यादा, क्योंकि टाइम पीरियड सब फिक्स होता है ना। कंपोनेंट ऑफ गुड रिसर्च क्वेश्चन एग्जांपल। ओके, देयर इज वन एग्जांपल। इज देयर डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ मैनुअल सर्जरी वर्सेस द कंप्यूटराइज सर्जरी? मतलब हमको ड्यूरेशन की हम स्टडी करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, मैनुअल सर्जरी कंपेयर्ड विथ कंप्यूटराइज असिस्टेंट सर्जरी इन द पेशेंट विथ हिप रिप्लेसमेंट ऑफ एज ग्रुप 660 एंड अबव। तो पेशेंट कौन है यहाँ पर? हिप रिप्लेसमेंट हैविंग द एज ग्रुप 60 मोर देन 60 इयर्स। इंटरवेंशन कंप्यूटराइज असिस्टेंट सर्जरी। ओके, कंपैरिजन किसके साथ करना चाहते हैं? मैनुअल सर्जरी के साथ। और आउटकम क्या है? वो ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी, एक्यूरेसी ऑफ सर्जरी नहीं, और ड्यूरेशन देखना चाहते हैं। और लास्ट इज टाइम। तो टाइम यहाँ पर नहीं है, मैंने पहले कहा पिको क्राइटेरिया इज आल्सो सफिशिएंट। टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, डी एंड सी। ओके, डिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव एंड एसोसिएशन। ओके, तो अगर हमको रिसर्च क्वेश्चन याद रखना है कंप्लीटली रिसर्च क्वेश्चन, तो इसके लिए बहुत सिंपल एक निमोनिक्स है, VPS, जो मैंने पहले बताया। VPS में VP सिंह, लाइक दैट। जस्ट इमेजिन करें कि VP सिंह एक फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, और VP सिंह फॉरेस्ट मिनिस्टर होने से कारण फॉरेस्ट में गए, एंड पिकॉक, मतलब एक पिकॉक पकड़ा, एंड डूइंग डी एंड सी, रसशास्त्र वाली। डी एंड सी मीन्स डिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव एंड एसोसिएशन टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। Descriptive research question always start with WH type of research question. Then second is comparison. Start with what is the difference between this drug and that drug, like that. What is the difference is important word for the comparative type of research question. Then association. When you talk about the association, that is there is minimum 2 or more than 2 variables. Okay, because without more than 2 variable or 2 variable, we cannot check or we cannot assess the association or correlation or interaction or interrelation between these 2 or more variables. Okay,
when we call it association and correlation, there is a basic difference. When you try to compare, or when we try to find out the relation between two subjective criteria, we use the word association. And when we find out the relation of objective matter, then we will use a correlation word. Okay. There is two types of variable. First one is independent, and second is dependent. Okay. Independent means, I already told you, risk factor, that is cause, and dependent, outcome or disease. Okay. Association, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट में क्या एसोसिएशन, ये हमें देखना है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, पहले ये ले लेते। स्टडी 1 में हमने देखा एक्सपोजर था स्मोकिंग एंड आउटकम है हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर स्मोकिंग इज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल and hypertension is dependent variable. But in case of second study, hypertension is the exposure for cardiac disease. That's why hypertension is our independent and cardiac disease is dependent our variable. Okay. Next one. Example of descriptive types of research. First example. There are 3 types of research question now. First, descriptive. How many calories do the medical student of the Maharashtra consume per day? Variable क्या होगा कि calories consume per day and population medical student of Maharashtra. Okay. Next comparison. I already told you what is the difference in the monthly expenditure on movies in boys and girls in a Ayurveda college. What is the exact difference? हम difference find करने की कोशिश करते हैं. That's why here variable is monthly expenditure on movies and population is again boys and girls in Ayurveda college. Third is association type of research question. That is very important. What is the relation? What is the correlation? What is the association like that? Among birth weight and length of the newborn with maternal weight and the maternal height in babies delivered in hospital. Yes. Means यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 2 वेरिएबल मिल रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मैटरनल वेट एंड लेंथ, क्योंकि मैटरनल वेट एंड लेंथ के ऊपर डिपेंड होगा क्या? बेबीज वेट एंड हाइट एंड लेंथ, दैट इज वेट एंड लेंथ. Okay, that's why here mother's weight and length is independent, while baby's weight and length are dependent variables in this condition. For example, and what is the population? Newborn and their mother delivered in hospital. Yes, this is the combined population. Next step is research hypothesis. First step, idea. Second, research problem. Third, research question. And fourth one is research hypothesis. Okay. What is the hypothesis? Hypothesis is a logical supposition which will may be true in future, and any logical statement or testable prediction. तो हम ऐसा कोई भी prediction जो test कर सकते हैं is called research hypothesis. The definition is logical supposition. Again, hypothesis is the integral part. Integral part means समवाय संबंध होता है उसका. Integral part of analytical and experimental studies. But in case of descriptive studies, there is no hypothesis, because descriptive studies are hypothesis generating studies. Okay. That's why research hypothesis is an integral part for analytical and experimental studies only. Types of hypothesis. There are 3 types of hypothesis. And for that, we will very easily remember using the simple mnemonics, that is simple direction of research. Mnemonics, simple direction of research. Simple opposite complex, directional opposite non-directional, and research, that is alternative hypothesis. Opposite of that alternative is null hypothesis. Simple direction of research. Simple complex, directional non-directional, and null and alternative, or we can simply say that research hypothesis. Okay. What is meant by simple hypothesis? Having one dependent, one independent. It is simple hypothesis. More than 2, it is complex hypothesis. Okay. Directional,
there is a particular direction. It may be positive or it may be negative. When we say that like that, the IQ of boys and girls, okay, or other way we can say that the IQ of girls is more than boys present in our class, for example. Okay, so I already given one direction. I already biased. Okay, that was first type of it's called directional hypothesis. Or on the other hand, the IQ of boys is more than girls. Same. I give the one direction. It may be positive or negative. Okay. Non-directional. There is no difference between the IQ of the boys and girls present in this lecture. Okay. मतलब अगर हम कोई प्री-अज्यूम करते हैं और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हम तभी यूज करते हैं मोस्टली जब ऑलरेडी कहीं प्रूव हो जाता है. ऑलरेडी अगर प्रूवन है तो ही हम ज्यादातर यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पंजाब के लोगों की हाइट महाराष्ट्र के लोगों की हाइट से ज्यादा है, ये प्रूवन है. तो हमें इतना देखना है सिर्फ कि एवरेज हाइट ऑफ महाराष्ट्र पीपल ये जो है कि पंजाब के लोगों से कितनी कम है या पंजाब के लोगों की एवरेज कितनी ज्यादा है. ओके, तो हम यहाँ पर जो होता है वन टेल स्टडी डिजाइन यूज करते हैं, मतलब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस यूज करते हैं सिर्फ. और लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस. There is a difference, that is alternative hypothesis, and when we say there is no difference between the IQ of the boys and girls present in this hall, such type of hypothesis is also comes under the null hypothesis. Okay. There are two examples of research question. We will try to make the hypothesis on the basis of that research question. What is the difference in daily caloric intake of male and female medical students of Maharashtra? Hypothesis will be there is a difference in the caloric intake. Okay, there is difference. And second example, what is the relation between the weight and height? So we can use the positive word. There is a positive relationship, or we can simply say that there is a no relationship. On the basis of using different word, we can convert into different types of hypothesis. Simple. Next topic is types of research. Okay. Various types of research, but we will discuss among that few types of research in present lecture. And after that, basic concept of study design. Okay. First types of research: primary and secondary research. What is the difference between primary and secondary? Published by who actually does it? जिसका काम है, जिसने पब्लिश किया वो प्राइमरी रिसर्च हो गया. सेकेंडरी, अगर हम सभी की जो प्राइमरी वर्क है और उसके ऊपर कुछ सिस्टमैटिक रिव्यू करते हैं या मेटा एनालिसिस करते हैं, है ना, सभी का वर्क लेके और उसके ऊपर स्टैट लगाते हैं, इसको मेटा एनालिसिस. और नैरेटिव रिव्यू लेते हैं, ओके, या फिर स्कोप रिव्यू लेते हैं, तो इसको सिस्टमैटिक रिव्यू. ओके, सिंपल है. बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च. बेसिक रिसर्च इज मोस्टली done for the driven by pure quest of knowledge. Okay, we will try to find out the basic truth of principle with the help of this basic research. And one more important thing is basic research is not time bound. Okay, never primary issues for the society. But on the other hand, when we discuss about the applied research, it is very much motivated by the need. Okay, हमने कोविड में देखा था कि रातों रात, है ना, कितनी रिसर्च स्टार्ट होते थे, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च, सबको रिजल्ट चाहिए था. Such type of research are called as applied research, and may be based on the result of basic research. जो भी बेसिक रिसर्च सेल का स्ट्रक्चर वगैरह वही यूज होता था, लेकिन अप्लाइड रिसर्च टाइम बाउंड होता है, तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट होते हैं, फाइंडिंग solution for the immediate problem, and also this is relatively expensive than basic research. Okay, for example, मोबाइल का है या स्पोर्टमैन है, जैसे कोई जो भी प्लेयर है उन्होंने अगर बताया स्पोर्टमैन ने कि मुझे लगता है कि ये जो मेरी बैट है क्रिकेट की, इसमें मुझे समथिंग प्रॉब्लम लग रहा है, तो उसके ऊपर तुरंत रिसर्च किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा है. इसको अप्लाइड, ऐसा नहीं कि देखेंगे एक महीने बाद, ऐसा नहीं होता.
ओके, या रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स, है ना। जैसे ही अगर उसका जेल से छूटता है तो उसका रिहेबिलिटेशन तुरंत करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो समाज में जाएगा और बाद में फिर से क्या करता है पता नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, और बेसिक रिसर्च में रिसर्च ऑन प्रकृति है या जीनोम्स है या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। अगर माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स नहीं किए तो साइंस के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। लेकिन जब अप्लाइड रिसर्च करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस बेसिक रिसर्च इज वेरी मच important for further research. Next one is quantitative and qualitative. Quantitative में आपको पता है जहाँ पे वेरिएबल होते हैं, है ना, और खास करके when we explain our result in the rates and ratio, such type of research is called quantitative. And on the other hand, when we explain our result in percentage and degree, remember percentage and degree, such a research comes under qualitative research. Okay, finding is based on statement on description. It is very much based on description. Okay, जैसे लघु गुरु ये जो गुण है ना, एट्रीब्यूट्स, ये जो गुण है इसको एट्रीब्यूट्स कहते हो। तो गुणात्मक जो स्टडी होती है मोस्टली क्वालिटेटिव होते हैं। उसमें इथनोग्राफिकल स्टडी आता है, फोकस ग्रुप डिस्कशन, या फिर इन डेप्थ इंटरव्यू होता है, राइट, या टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। ये सभी क्वालिटेटिव में आते हैं। और क्वांटिटेटिव किधर दिए हमने, केस कंट्रोल, कोहॉर्ट, लाइक दैट वी विल सी वन बाय वन। ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल having the two types, descriptive and analytical, and experimental is, that is when there is intervention we call it experimental. मैंने कहा intervention क्या है, कोई भी if a researcher intervene anything to modify the variable is called experimental research. Simple. Okay, and observational में do not deviate the variables in study is called observational research. Okay, this is very important chart. Please remember all the participants. Study design. Basically, study design divided into two parts, qualitative and quantitative. We use this qualitative study design for to find out the subjective criteria or subjective research. And for example, opinion, attitude, okay, perception or feelings. For these things evaluated using qualitative study design or qualitative research. For that, we will use focus group discussion, in-depth interview, okay, or questionnaire like that. But today's our topic is, today we are dealing, especially dealing with the quantitative study design. Okay, quantitative types of design. Quantitative study design is again divided into two main types of study design, observational and experimental. Please remember, observational means first, जब हम कोई एक्टिव इंटरवेंशन यूज नहीं करते, ओके, या कोई भी वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं करते, ऑब्जर्वेशनल ऑब्जर्व करते, सिर्फ ऑब्जर्व करते, उसके ऊपर हम रिजल्ट लेते कि क्या है, क्या ऑब्जर्वेशन से वो लेते, और उस ऑब्जर्वेशन को आगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक लगाकर, है ना, और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर हम हमारा रिजल्ट इंप्लीमेंट करते हैं, इस्टेब्लिश करते, सॉरी। Second, experimental. First of all, we do experiment and then observe the result. And on the basis of that result, we will try to get on the conclusion. Again, observational study design is divided into two parts, descriptive and analytical. Descriptive, when there is only one group or there is no comparison, called as descriptive type of study. And when there are two groups or more than two groups, such type of study comes under the analytical observational study design. Okay, and what is the basis? No comparison and comparison. This is the only basis for descriptive and analytical, because both of these are the types of observational. Okay, but if there is only one group, descriptive, and there are two groups or more than two groups, or there is a comparison, we can say that there is a comparison,
That is analytical. Simple. Next, again, descriptive type of study divided into 3 subtypes: case report, case series, cross-sectional, longitudinal, and analytical. Again, divided into 3 types: cohort, case control, cross-sectional, analytical, and last, experimental is also divided into clinical trial, field trial, and community trial. इसको याद करना है, उसके बिना हमको आगे का जो लेक्चर है वो याद नहीं हो पाएंगे. ये अगर याद हो गया तो हम आगे चलते हैं. आई विल एक्सप्लेन अगेन. स्टडी डिजाइन इसको 2 भाग में डिवाइड किया, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव की अगेन 2 पार्ट्स है, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल. ऑब्जर्वेशनल मीन्स फाउंड करने, मतलब ऑब्जर्व करके हम इंटरप्रेट करते हैं, एंड एक्सपेरिमेंटल में करून पाहणे मीन्स पहले एक्सपेरिमेंट करते और बाद में नोटिंग लेते या ऑब्जर्व करते या रिजल्ट लेते. ऑब्जर्वेशन अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल. अगर कंपैरिजन है तो डिस्क्रिप्टिव, सॉरी कंपैरिजन नहीं है तो डिस्क्रिप्टिव, और कंपैरिजन है तो एनालिटिकल. ओके, डिस्क्रिप्टिव के 3 टाइप है. केस रिपोर्ट. केस रिपोर्ट में सिंगल केस है तो केस रिपोर्ट, रिमेंबर प्लीज, सिंगल केस. और मोर देन 1 केस है तो केस सीरीज. क्रॉस सेक्शनल, आई विल एक्सप्लेन लेटर. क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल मीन्स 1 टाइम स्टडी. क्रॉस सेक्शन देते ना 1 टाइम स्टडी. एंड लॉन्जिट्यूडिनल. लॉन्जिट्यूडिनल मीन्स बिफोर आफ्टर टाइप ऑफ स्टडी, इसको लॉन्जिट्यूडिनल. I will explain one by one. First of all, you just remember the outline of this study design. Then cohort. Cohort, cause to effect. Prospective type of study होती है. Okay, forward looking बोलते उसको. Cause to effect. हमें cause पता है, effect सर्च करने की कोशिश करते हैं. Case control, exactly opposite. Effect to cause. This is already occurred, and we will just try to find out what is the cause of that disease. That is case control. And last is cross-sectional analytical. Difference समझ लो, डिस्क्रिप्टिव में क्रॉस सेक्शनल है और एनालिटिकल में क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल है. तो डिफरेंस सेम. क्या डिफरेंस है? एक ग्रुप है क्रॉस सेक्शनल, टेकिंग ऑब्जर्वेशन एट ओनली 1 टाइम. एनालिटिकल में भी हम ओनली 1 टाइम ही ऑब्जर्वेशन लेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वी विल टेक फ्रॉम 2 ग्रुप्स, एंड आफ्टर दैट compare these 2 groups on the basis of observation. Such type of study is called cross-sectional analysis. And then experimental, clear-cut intervention. अगर intervention है तो experimental. Intervention मतलब internal medicine, external, like that yoga, and also control group. Experimental studies are divided into 3 categories: clinical trial, field trial, and community trial. Just imagine कि क्लिनिक में बैठे तो क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिक से बाहर आ गए तो फील्ड ट्रायल, और कम्युनिटी में गए दैट्स कम्युनिटी ट्रायल. ओके, ये चार्ट याद होना चाहिए. वन मोर इम्पोर्टेंट लाइन, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हाइपोथेसिस जनरेटिंग स्टडीज और हाइपोथेसिस फॉर्मेशनल स्टडीज, while analytical studies are hypothesis testing studies. We will test the hypothesis in analytical studies, and after that we will confirm that same hypothesis in experimental studies. That is hypothesis confirmation. Okay, hypothesis generation, testing, and last one is confirmation. Okay, we will see one by one. Now, please, we will go a little bit fast. Please focus on slides. Descriptive study. Having only one group? Yes. There is no comparison group? Yes, correct. No need of hypothesis because it is a hypothesis generating study. Okay. And what will we see with the help of the descriptive studies? Attitude, survey, perception. Okay. Mean, median, up to behavior studies. Limited area. We will check the limited area using descriptive studies. Next one is descriptive studies. Number 1, case report. Single case study अगर है तो case report.
लेकिन ये जो सिंगल केस होती है, दिस केस मस्ट बी रेयर, प्लीज रिमेम्बर रेयर। केस रिपोर्ट में जो केस हम प्रेजेंट करते हैं या जो पब्लिश करते हैं, इट मस्ट बी रेयर, नॉट रूटीन। समथिंग इज न्यू इन दैट केस। केस सीरीज, सिमिलर केसेस but more than one, it's called case series. Cross-sectional. Diagnostic test is performed only once. You all of you know, only once, taking observation for only one time. And what is the use of that cross-sectional? To find out the prevalence rate of disease. Okay. On the other hand, longitudinal study is used to find out the incidence rate. Which rate? Incidence rate of disease. Then my next question is, what is the difference between the prevalence rate and incidence rate? Okay. Prevalence rate means prevalence rate क्या? Under prevalence rate, we find out the old plus new cases of same disease is called prevalence. Means old plus new cases is equal to prevalence. But in case of incidence, there comes only new cases under the incidence over a period of time. Okay. Diagnostic test is performed more than one over a period of time in same or different individual in the same population. Basically, in longitudinal, we take the observation more than one time, before and after, like that. मतलब हमें अगर स्टडी करना है ओबेसिटी की, ओके, तो जस्ट इमेजिन करिए, जो भी हम लेक्चर में लोग उनका एग्जाम्पल लेते हैं बार बार ताकि समझने के लिए इजी जाए. What is the prevalence of hypertension? Okay, prevalence of hypertension in this group, in our group. So what we'll do, we will take only blood pressure at a time and conclude our result कि इतना परसेंट प्रिवेलेंस है, करेक्ट. लेकिन मेरे लेक्चर के पहले आपका ब्लड प्रेशर कितना था और लेक्चर खत्म होने के बाद आपका ब्लड प्रेशर कितना है, इसमें कोई वेरिएशन है क्या? दैट इज बिफोर आफ्टर. फर्स्ट टाइप ऑफ स्टडी कम्स अंडर द लॉन्जिट्यूडनल, बिकॉज यहाँ पे हमने 2 बार ऑब्जर्वेशन लिए, ठीक है. प्रिवेलेंस मीन्स फिर क्या हुआ, ओल्ड प्लस न्यू केसेस, इसको प्रिवेलेंस, एंड ओनली न्यू केसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज इंसिडेंस. डिफरेंस समझ में आ गया, आई होप. क्रॉस सेक्शनल इज कॉल्ड एज स्नैपशॉट स्टडी बिकॉज वन टाइम होती है ना, नॉट प्रोस्पेक्टिव, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, दैट इज सिंगल पॉइंट स्टडी but not so perfect. For example, smoking today is 40% and lung cancer is 1%. Can say smoking lead to cancer? मतलब स्मोकिंग इतने परसेंट लोग करते हैं और लंग कैंसर इतने में है, 1% लोगों में. तो एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं. We cannot reach exactly on conclusion. Not forward direction. Okay, that is no incidence study. क्योंकि at a present time study है ना. That's why we cannot calculate RR. RR means relative risk. Cannot calculate the OR, that is the odds ratio. Only gives you prevalence rate. Simple. For example, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती. टाइम स्टार्ट हुआ, हमने पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉन किए एंड टेकिंग ऑब्जर्वेशन एट ओनली वन पॉइंट, ओके, सिंगल टाइम. दिस इज द स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन फॉर क्रॉस सेक्शनल स्टडी. Second one is longitudinal. There is one population, we take a sample from that population and taking a observation at 4 different times. Okay, 4 different times. That's why such type of study comes under longitudinal study. Next is analytical study. There is a difference or comparison. हम अगर चेक करना चाहते हैं कि there is a difference or comparison, for that purpose we use or we go for analytical study. Basically, hypothesis generated from the descriptive studies is tested by that analytical studies.
Here test the association between exposure and outcome, or simple cause and effect, or very simple cause and disease, और हेतु एंड व्याधि कि भाई अगर डिसीज है तो इसका कॉज के साथ क्या कुछ कोरिलेशन है, ये अगर हम फाइंड करना चाहते हैं एसोसिएशन तो गो फॉर एनालिटिकल स्टडी. फॉर एग्जांपल, okay, we will explain one by one. First is cohort, cause to effect. And in other word we can say that cause to disease or exposure to outcome. देखिए हमने दो ग्रुप ले, एक स्मोकर है एक नॉन स्मोकर है, दो ग्रुप है. दोनों ग्रुप को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मिनिमम 10 ईयर 15 ईयर्स. और मुझे बताइए आपकी दो ग्रुप है, एक स्मोकिंग करने वाला है और एक स्मोकिंग नहीं करने वाला है. करेक्ट. हम इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं 10-15 साल. रिजल्ट क्या आएगा? जो हमारा एक ग्रुप था स्मोकिंग करने वाला, करेक्ट, स्मोकिंग करने वाला, उसमें दो रिजल्ट आ सकते हैं. वेदर दिस पीपल इज विल सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर और मे नॉट बी, हो भी सकता है लंग कैंसर, नहीं भी हो सकता है. और दूसरा जो ग्रुप था नॉन स्मोकर का, उसमें भी आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे. कुछ लोगों को लंग कैंसर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. इतना रिजल्ट आएगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा. 4 ग्रुप होंगे उसके, क्योंकि हमने 2 लिए थे, स्मोकर नॉन स्मोकर, ऑब्जर्व किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके. और फाइनल कंक्लूजन करने के लिए हमने आधार लिया कि एक तो स्मोकर्स में लंग कैंसर हुआ या नहीं हुआ, और नॉन स्मोकर में लंग कैंसर हुआ या नहीं हुआ. सिंपल. ठीक है, ये है इसका सिंपल फॉर्म, एकदम सिंपल. जब हम कोहॉर्ट पीएचडी लेवल में लेते हैं तो सिर्फ एक कोहॉर्ट को 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है पढ़ाते पढ़ाते. लेकिन इसका बेस कहाँ है आप समझ लो, मैं बेस बता रहा हूँ. यूजी लेवल में एकदम हम ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं. ओके. सेकंड है हमारा केस कंट्रोल. तो जैसे यहाँ पे हमने कॉज से चालू किया था, कॉज क्या था? स्मोकिंग. कॉज से चालू किया और आउटकम पे रुक गए, डिसीज पे रुक गए, कॉज टू इफेक्ट. लेकिन केस कंट्रोल की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे भी दो ग्रुप होते हैं, एक केस और दूसरा कंट्रोल. ओके. लेकिन ऑलरेडी फिनोमिना ऑकर, मतलब डिसीज ऑलरेडी ऑकर, लंग कैंसर ऑलरेडी हो चुका है. फिर हम दो ग्रुप करते हैं, एक लंग कैंसर का और एक विदाउट लंग कैंसर का, मतलब एक सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर और दूसरा हेल्दी पेशेंट, इन शॉर्ट. और ये दो जो पेशेंट होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, सर दो ग्रुप, इस दो ग्रुप को हम रेट्रोस्पेक्टिवली असेस करते हैं. और रेट्रोस्पेक्टिवली असेस करने का सबसे बेस्ट टूल कौन सा है? हिस्ट्री टेकिंग. यस, हिस्ट्री टेकिंग. तो हम इनको दोनों को हिस्ट्री टेकिंग भी ले सकते हैं, आप क्वेश्चनर ले सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो हम पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. पर समझने के लिए जस्ट कॉन्सेप्ट समझो. दो ग्रुप थे, लंग कैंसर एंड हेल्दी पेशेंट विदाउट लंग कैंसर, ये दो ग्रुप, और दोनों ग्रुप को हम अपोजिट डायरेक्शन में सर्च कर रहे हैं कि कुछ कॉज है क्या. तो कॉज क्या हैपन हुआ ये देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हिस्ट्री ले सकते हैं. सिंपल. ठीक है, ये हो गया पहला रूल. सेकंड, स्टडी स्टार्ट इन केस ऑफ कोहॉर्ट, स्टडी स्टार्ट बिफोर occurrence of disease, and in case of case control, study start compulsorily after occurrence of disease. Okay, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है. बिफोर स्टडी डिसीज था ही नहीं, सिर्फ एक्सपोजर थे दोनों या कॉज था. और एक मेन डिफरेंस बताता हूँ आपको. When exposure is rare, when exposure is very rare or rare, go for cohort. And when outcome is rare, okay, where disease is rare, outcome is disease. Where disease is rare, go for case control. For example, जो भोपाल गैस की स्ट्रेटेजी हुई थी वो बार बार नहीं होती है, रेयर एक्सपोजर था. तो एक बार एक्सपोजर हुआ तो वहां से कितनी सारी स्टडी स्टार्ट हो चुकी थी कि एक लोकल एरिया में जो जहाँ पे गैस का ब्लास्ट हुआ था, लोकल एरिया के ऊपर क्या असर हुआ, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, या
जो भी है उसमें भी एज ग्रुप, पीडियाट्रिक एज ग्रुप, यंग एज ग्रुप, ओल्ड एज ग्रुप, इसके ऊपर क्या हुआ, ओके, देन एएनसी के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स हुए, तो ऐसे बहुत सारे कोड स्टार्ट हो गए. दैट्स व्हाई प्लीज रिमेंबर, व्हेन एक्सपोजर इज रेयर go for cohort and disease is rare, go for case control. Okay. और एक कॉन्सेप्ट बता दूं, केस कंट्रोल, केस एंड कंट्रोल. केस में डिसीज एंड कंट्रोल मींस विदाउट डिसीज. केस कंट्रोल की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात करें, तो वहां पे भी कंट्रोल ग्रुप होता है. एक होता है ट्रायल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप. करेक्ट. तो यहां पर जो कंट्रोल वर्ड है, ये कंट्रोल मतलब कौन सा कंट्रोल, एक्सपेरिमेंट का जो कंट्रोल की बात कर रहा हूं, और केस कंट्रोल स्टडी का जो कंट्रोल ग्रुप है, ये दो कंट्रोल ग्रुप में क्या फर्क है, ये थोड़ा समझ लो. in case of case control, there is a control group, but this control group is without disease, as a healthy person, not healthy but do not having same disease. Please remember, in case of experimental study design, control group is also suffering from disease. Even we can say that control group is also suffering from same disease like the trial group. Okay, ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिए. हम नेक्स्ट जाते आगे आगे, टाइम थोड़ा कम है, लास्ट 5 to 10 मिनट्स में फिनिश करना है. दिस द एक्सपोज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कोहॉर्ट. आपको फ्रेमवर्क देखिए, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा. रेफरेंस पॉपुलेशन था, उसमें हमने हमारा स्टडी पॉपुलेशन निकाला, उसमें से एक्सपोज और अनएक्सपोज, मतलब स्मोकर और नॉन स्मोकर, ये दो ग्रुप हो गए. एक्सपोज में स्मोकर्स एंड नॉन एक्सपोज में नॉन स्मोकर्स. we're taking the follow long follow, okay, over the period of 10 or 15 years, and then find out the affected and non-affected at the same time. Also we can find out affected and non-affected in unexposed group also, and then doing calculation on that data. This is not a part of this session. Case control. Effective cause, this is to cause or outcome to exposure. Study start after occurrence of disease. I already explained, after occurrence of disease. For example, this is the schematic presentation. Time start first, then exposure occurred already exposure occurred here, then disease is also present. Okay, and after coming of disease, we can start after formation of disease or after occurrence of disease. This is also one beautiful diagram given in the book of Dr. Kulkarni sir, study design, case and control. And in cases we choose some sample and also taking sample from control group, and again to take a history, you know, this sample from cases and sample from controls are exposed or unexposed for that particular cause. अगर आपको लगता है कि लंग कैंसर का कॉज सिर्फ स्मोकिंग हो सकता है या ड्रिंक मतलब अल्कोहल हो सकता है, लाइक दैट, तो आप सभी कॉज एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें. क्रॉस सेक्शनल सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं, बाकी सेम होता है. डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी: कैन नॉट मेजर इंसिडेंस, यस, ओनली शो एसोसिएशन नॉट कॉजेशन. आपको एसोसिएशन मिल जाएगा क्रॉस सेक्शनल में कि कुछ तो एसोसिएशन है, बट एग्जैक्टली क्या कॉज है उस एसोसिएशन के पीछे ये हम नहीं बता पाएंगे. राइट, नॉट सुटेबल फॉर द डिसीज विच आर रेयर, शॉर्ट ड्यूरेशन, हाईली इफेक्टिव. ऐसे टाइप के स्टडी के लिए हम क्रॉस सेक्शनल यूज नहीं करते. एक्सपेरिमेंटल, जिसके ऊपर आपका अलग लेक्चर हो जाएंगे. एक्सपेरिमेंटल मैंने जैसे आपको नाम बताए, कौन से 3 नाम थे आपको याद आ रहा होगा. क्लिनिक में बैठे तो क्लिनिकल ट्रायल, देन फील्ड ट्रायल, एंड लास्ट वन इज कम्युनिटी ट्रायल. ओके, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, selection of topic on the basis of this Finner's criteria. Okay, F for feasibility, I for interest,
It's called Finner's criteria. N for novelty, E for ethicality, R for relevance, and S for socially useful. Before taking or before choosing the topic for research, we must go for this Finner's criteria. Okay, we will see one by one. First, feasibility. Okay. Feasibility. Mnemonic से TTMM से, it's mnemonic for feasibility. Feasible means अगर हम कुछ रिसर्च करना चाहते हैं तो this is technically possible. First is technically क्या हम उसको कर सकते हैं हमारे इंडिया में, हमारे कॉलेज में, हमारे पेरिफेरी में. Then affordable in time. क्या उतना हमारे पास टाइम है? अगर हम पीजी स्टूडेंट है तो क्या उतना हमारे पास टाइम है? या अगर हम यूजी स्टूडेंट है और हम शॉर्ट प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो शॉर्ट प्रोजेक्ट मीन्स इट मस्ट बी फिनिश विद इन 15 or 1 month or in summer vacation or winter vacation. Okay. So affordable in time, manpower, available manpower, please check. Affordable in money, सबसे important, ये तो आप देखते ही हो, ये तो सभी लोग देखते हैं, इसके ऊपर चर्चा करना ही नहीं है. Availability of sample size. अगर आप जो भी डिसीज के ऊपर या जो भी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चाहते हो, क्या उसकी सैंपल साइज अवेलेबल है उतनी? या हमने ले लिया और बाद में पता चला कि सैंपल साइज ही नहीं है उतनी उस डिसीज की. अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट लगते हैं आपके रिसर्च के लिए और ग्रांट है आपको 25,000 ओनली फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं होते ऐसे इंस्ट्रूमेंट खरीदना, इक्विपमेंट लेना. ओके, तो डिसाइड अबाउट द फुल्ली, पार्शियली और नॉट फिजिबल. स्टूडेंट सेक्टर में खास करके कोई भी रिसर्च फुल्ली फिजिबल नहीं होता है. ओके, तो प्लीज ऑब्जर्व फॉर और गो फॉर पार्शियली फिजिबल. अगर पार्शियली फिजिबल भी है तो भी हम आगे जा सकते हैं. इंटरेस्ट, टॉपिक शुड बी इंटरेस्टेड इन व्यू ऑफ द रिसर्च टीम और खास करके रिसर्चर. बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि एक पीजी स्टूडेंट के बारे में कभी कभी ऐसा होता है कि उसके माइंड में एक टॉपिक होता है और वो टॉपिक उसको नहीं मिलता है. ऐसा नहीं कि उसके दिमाग में है उसको लिए मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं. बहुत बार स्टूडेंट कभी कभी मतलब इजी के साथ जाना चाहते हैं कि ये टॉपिक इजी है और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन वो ये देखते नहीं बहुत बार कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है, सोशली कुछ यूजफुलनेस नहीं है. सोशली जान दो उसको, खुद के लिए भी अगर यूजफुल नहीं उस टॉपिक का तो ऐसा टॉपिक नहीं लेना चाहिए. ओके, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि स्टूडेंट को बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं एक टॉपिक में, बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट, और वो टॉपिक उसको दिया जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना. उसका इंटरेस्ट के एरिया में अच्छा टॉपिक भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इंटरेस्ट क्यों होना चाहिए? अगर हम इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, उसकी इच्छा नहीं होगी काम करने की, और उसके बाद ढेर सारे प्रॉब्लम्स आएंगे. फॉर एग्जांपल बायस आएगा, उसको फ्रस्ट्रेशन आएगा. तो ये सब प्रॉब्लम आने के लिए रिसर्च शुड बी इंटरेस्टेड, है ना. नेक्स्ट वन इज नॉवेल्टी. नॉवेल्टी, यस, न्यू टॉपिक ऑफ ऑल एस्पेक्ट, नो डाउट. अभी जो नॉवेल्टी है, तो नॉवेल्टी मतलब किस एंगल से नॉवेल्टी? मैं आपको 2-3 एंगल बताता हूँ. नया मतलब क्या? नंबर 1, क्या आप जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है ड्रग की, क्या उसको रिड्यूस कर सकते हैं? रिड्यूस द कॉस्ट. सेकंड इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, डोज. हम मोस्टली आयुर्वेदिक में कभी कभी 3 टैबलेट्स भी देनी पड़ती है डोज मेंटेन करने के लिए, 3 टैबलेट एट ए टाइम. और अगर ऐसे 2-3 ड्रग अगर है तो 3 दैट इज 9-10 टैबलेट हो जाती है. तो हम डोज मेंटेन करने के लिए देते हैं, नो डाउट, है ना. लेकिन जब पेशेंट लेते हैं उसको, तो कुछ पेशेंट होते हैं जिनको टैबलेट लेना बहुत इजी होता है, फटफट 3 एक साथ भी लेते हैं और ले लेते. बट अभी भी कुछ बड़े लोग भी ऐसे हैं, मतलब एडल्ट, जिनको टैबलेट लेना मुश्किल होता है, और वो भी 9 टैबलेट एक साथ. तो अगर इस कंडीशन में हमारा रोल क्या है? कैन वी रिड्यूस द डोज? सेफ्टी, फोर्थ वन सेफ्टी. अगर कोई प्रोसीजर जो सेफ्टी नहीं है तो उसको हम सेफ्टी में कैसे कन्वर्ट कर सके, वो हमें देखना चाहिए. न्यू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे nowadays modern scientists is very much try to find out the new route of transmission or new route of administration the new drug. Okay, for example, we observed that in COVID era, some scientists find out the nasal route. Okay,
because nasal mucosa is very much sensitive, or drug is directly absorbed in the nasal mucosa, like that. अभी मॉडर्न के साइंटिस्ट कुछ स्किन के ऊपर भी काम करना चाहते हैं कि डायरेक्ट एब्जॉर्ब होगा क्या, जैसे सपोजिटरी थी, उनकी जो सपोजिटरी थी पैरासीटामोल की, सबको पता है, तो ये एक उनका रूट था। नॉर्मली पैरासीटामोल ओरली देते थे, लेकिन जब फीवर बहुत ज्यादा है तो ऐसे कंडीशन में हम पैरेंटल जो रूट है, सॉरी एनस जो रूट है वो भी यूज करते हैं। तो रूट इसके ऊपर थोड़ा काम करेगा, कुछ हम चेंज कर सकते हैं या नहीं। रेप्लिकेबल, आपका जो भी रिसर्च है वो रेप्लिकेबल होना चाहिए, रिप्रोड्यूस होना चाहिए। एक्सट्रीम प्रीवियस फाइंडिंग, ओके, प्रोवाइड द न्यू फाइंडिंग्स, ओके, बट नॉवेल्टी मीन्स एग्जैक्टली नॉट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ओके, इतना भी नया नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, इथिकल, आपका रिसर्च इट शुड बी इथिकल। वी स्टार्ट आवर रिसर्च after giving the permission, after pursuing the permission from IEC, ethical committee. Then large scale, अगर large scale study है तो we submit the proof of safety. Placebo का ऐसा है कि 3 महीने से ज्यादा हम प्लेसिबो ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। अगर उसमें कुछ पॉइजनस ड्रग है तो वो भी नहीं कर सकते। अगर स्टैंडर्ड थेरेपी अवेलेबल है कोई भी डिसीज की स्टैंडर्ड थेरेपी, तो हम डायरेक्टली प्लेसिबो के लिए नहीं जा सकते, हमको स्टैंडर्ड ड्रग यूज करना पड़ता है। अगर पेशेंट को कोई थ्रेट नहीं है और सिंपल है तो देन एंड ओनली देन वी कैन गो फॉर प्लेसिबो। इन ट्रायल विदाउट इन्फॉर्म कंसेंट अनएथिकल, इन्फॉर्म कंसेंट के बिना तो आप पेशेंट को हाथ भी लगा नहीं सकते, पेशेंट के ऊपर एडिशनल बर्डन नहीं दे सकते, और इन केस ऑफ डेथ और एनी मिस हैपनिंग, रिसर्चर इंडीड टू गिव द कंपेंसेशन ऑफ दैट patient or their family. Okay, and for ethical, ICMR guideline is very useful for the researcher. Relevance, topic should be relevant. For example, related to problem of public health, तो relevant होना चाहिए. Otherwise, yellow fever in India, जो है ही नहीं, अगर आप yellow fever in India को काम करें, that is not relevant ना. Okay, study against the national health policy. For example, research or push someone with the is against national policy. Even it may be novel, novel है ना, but कुछ चीजें हम नहीं कर सकते. Social useful. विनर क्राइटेरिया का सबसे लास्ट है यस, आपने सब कुछ किया, पर वो जो रिसर्च है वो सोशली यूजफुल भी होना चाहिए. इट शुड बी सोशली यूजफुल. ओके, सर्विसिंग लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, betterment for human life, and also your research friendly to the environment and in social needs. After that, we will try to able so what is the exact definition of research using systematic work. After that, you remember TIPGO, that is testability, reparability, or confidence interval, then precision, generalizability, and go for objectivity. That is the good research criteria. Then you also able, I think, 4 steps of research: idea, problem, research, question, and hypothesis. Idea means in a new idea, yeah, 6 sense like that. Problem, before start the, when the researcher face some problem before starting the research, or difficulties faced by researcher before starting the research. Research question is actual starting point of research. Okay, and what is the mnemonics for research question? PPC, PCOT, and DNC. PPC, variable, population, yes, for study design, and PCOT. Again, PICO criteria, we will go for PICO criteria. Population, intervention, C for comparison, and O for outcome. Intervention means, I already explained intervention में क्या क्या आता है and outcome में क्या क्या आता है. Okay, then D and C, types of research question: descriptive, association, and comparison. And last step is hypothesis. Hypothesis means simple direction of research. Simple के opposite complex, directional, non-directional, and research के opposite null hypothesis. ये भी हमने देखा. Then types of research: big opaque, इसका निम्न सा big opaque, मतलब basic, applied, and observational, experimental, primary, secondary, qualitative, quantitative, like that. Then study design. Study design का चार्ट आपको याद होगा सभी को. Qualitative, quantitative divided into again two. Which one? Observational and experimental. Observational divided again to descriptive and analytical. Descriptive, that is only having only one group, or when there is a comparison, that is the analytical.
Okay. Descriptive, divided into 3 parts. One, case control, then cross-sectional and longitudinal. Okay. Again, analytical divided into 3 types: cohort, case control, and cross-sectional analytical. And on the other hand, experimental studies are also having the 3 types: first, clinical, field, and community trial. Okay. Hypothesis generating study is descriptive study, then hypothesis testing, analytical, and hypothesis confirmation with the help of experimental study. And last topic is our Finner's criteria. A for feasible, I for interest, N for novelty, E for ethical. मतलब ethics committee जो होती है उसके related हो ethical, R for relevant, and S for socially useful. Okay. I hope all participants are understand this session, and on the slides I complete my lecture. Thank you each and every participant and also organizer of this seminar or workshop. Thank you. Thank you, Kiran sir, for providing such an informative knowledge on research statistics. It's a new subject for medical student, especially for BMS 4th year student and PT 1st year student, but it is necessary just like all other subjects. Sir, you मैडम, made अगर it किसी को कोई sound easy क्वेश्चन and होंगे, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, स्टूडेंट को अलाउ कर सकता हूँ अगर किसी कोई भी क्वेश्चन है तो. Sir, there is no question in chat box. Okay, no problem. So at last, I would like to propose a big thanks to all Dr. Krishna sir, Dr. Gaurav sir, and Dr. Rahul sir for organizing this informative and knowledgeable session. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, thank you.